let us start now. So my first question is difference between blocking assignment and non-blocking assignment. Shashank. Sir, blocking assignment are generally used in procedural blocks, and these assignments are non-sequential in nature. Uh, it blocks the previous assignment until the previous assignment is complete. It don't let the next assignment to happen. Whereas the sequential, they run in parallel. Other assignment that run in parallelly, sequentially. Okay. Jyoti, you want to add something? Sir, I also want to say same thing, that blocking and non-blocking statements are used in procedural, and if there are set of statements, if in blocking statements, statements will be executed sequentially, like one statement will be executed and then it will go to next statement. But in non-blocking statements, it will the assignments will be done in parallel. Okay. Sir, one more thing. Yeah, regarding non-blocking, sir, blocking statements. Sir, in some case, for example, in events, the concept of events, the non-blocking statements results into race condition. Yes, sir. Okay. In order to avoid race conditions, sometimes non-blocking are generally used. ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लेना है ना, एक बार एग्जांपल के थ्रू भी समझाना है ना, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट पावर गेटिंग एंड क्लॉक गेटिंग? पावर गेटिंग एंड क्लॉक गेटिंग। Sir, I have not studied enough about this, but generally these techniques are used to reduce the power consumption of the circuits. I only know this. Jyoti, you want to say? Power getting and... No, sir, I didn't study yet. Okay, no. Power getting and clock getting. No problem, no problem. Difference between sequential and combinational circuits. Combinational sequential circuits, simple question. Yes, sir. Sir, the sequential circuits generally use clock in them, and generally not only depend on current state but also on the previous state. Whereas the combinational circuit don't use clock in them, and they generally depend on their current state of inputs only. Sequential circuits are generally used to design memory circuits, whereas the combinational circuits are generally used to design arithmetic circuits. Okay, okay, fine. Jyoti, you want to add something? Yeah. Combinational and sequential circuits or the digital circuits. Combinational circuits whose inputs depends on the present input, and whereas the sequential circuits, the output depends on the present output and as well as the present state of the memory. So sequential circuits have a memory element. Combinational circuits do not have any memory element. This sequential circuits uses clock. They changed whenever there is a clock transition or whenever there is a level trigger. But in combinational circuit, the output changes immediately after the input changes. In sequential circuits, there may be synchronous, asynchronous, and there may be counters, flip-flops used. In combinational circuits, there are multiplexers, adders, subtractors, which output only depends on the present input. Yeah, make the diagram also, and this is correct. Fine. Sir, I want to add something else. Sir, the sequential circuits are less prone to noise due to protection of clock. Until the clock changes, regardless of inputs, the output will not change. For example, if we have a logic high of -5 volts and we have a 10 volts of noise in the sequential circuit, if it was combinational circuit, the plus 10 volt of
noise will turn the -5 logic to high. But in sequential circuits, until the clock is provided, the output will not change. Hence, they are less prone to digital circuit noise. Okay. Which have the mod hardware then? Which is using mod hardware? Yes, sir. Which is Obviously, using more sequential hardware? circuits are having Okay. More hardware. Sir, more sir, generally the sequential circuits are usually used. Yes. Okay. So tell me about synchronous and asynchronous counters. Difference between synchronous and asynchronous counters with example. Who will tell? Jyoti will tell. yeah. So basically, counters are used to count the finite number of states. There are two types of synchronous and counters. There are synchronous and asynchronous counters. Basically, we give a clock to synchronous and asynchronous counter based on the applied clock. These are differ. That means if we give only one clock to the one flip flop, and the output of one flip flop is given to the clock to the next flip flop. This is asynchronous counter. In the synchronous counter, one clock is given to all the flip flops. Okay, fine. Okay. You want to add something? And synchronous counter and asynchronous counter has Yes, sir. more delay. Synchronous counter has less delay. So we use synchronous counter more frequently. And the Okay. synchronous counters are called parallel counter. Asynchronous counters are called ripple counters. In synchronous counter, we can jump to any state, but in asynchronous counter, we have to either we can up parallelly or down parallel. Means sequentially we can count the states. We cannot jump to any other state. Mhm. Okay, fine. Examples of the asynchronous counters are ripple counters, that is ripple up counter, ripple down counter. Synchronous counters examples are ring counter, Johnson counter, like. This is correct. Yeah. Shashank कुछ ऐड करना? Yes, sir. Same. Same है. हाँ. बस डायग्राम और Yes. बना देना. ट्रुथ टेबल और बनानी हो तो ट्रुथ टेबल. Yes, sir. Three input NOR gate give the high. सर वैसे एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ बोलो. सर जैसे लाइव इंटरव्यू में आप कह रहे हो कि डायग्राम बना देना, वो कैसे मतलब होगा? जैसे इस टाइम हम लाइव वीडियो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो नोटपैड पे ये तो क्विज है. अच्छा नोट. क्विज में हमको थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं कम टाइम में, है ना. तो इसलिए मैं आंसर भी नहीं बताता. मैं बोलता हूँ कि आंसर देख लो बाद में, है ना. क्विज, ये क्विज है, मॉक इंटरव्यू डिफरेंट वाला. यस सर. We have the three input NOR gate. NOR gate, three input. When it will be giving high output. High output कब देगा? NOR gate है हमारा three input NOR gate. So when it will be giving high output. So four options I am giving. When one input is high, one input is low, all input is low, all input are high. आउटपुट हाई है सर. All input. No output high है. One input is all low. inputs are low. Low. Yeah. सर रिक्वायर्ड आउटपुट क्या हाई है ना? हाँ, required output high है. One input is low sir. All input is low. One में तो क्या होगा? One में एक बार ट्राई करो. One input low. सर मल्टीप्लिकेशन NAND सर NAND गेट है. NOR. Okay, sorry sir. All inputs over. Okay, fine. So next question is, decade counter required how many flip flops? Decade counters required how many flip flops to implement? Decade counter पता है? More 10. Yes sir. More 10 counter. Yeah, how many flip flops? No sir, इसका. N is equals to 10. 10 was power. Means 4 flip flops. Yeah, fine. 4 to the power n. Yeah, 4. N is less than or equal to 2 power n. Like Yeah. that we can calculate. Exactly. Which of the following is the invalid state
in a 8421 binary coded decimal. First option is 1001, 1101, 1000, 0100. Which of the following is the invalid state in 8421 binary coded decimal? 1001, 1101, 1000, 0100. You can use a pen paper. Sir, can you repeat the options? Yeah. Okay. Without pen paper, how you will solve all the questions? Tell me. Yeah. It is 8421 binary coded decimal. Basically, it is BCD code, right? Yes, sir. Yes. BCD code. Yeah. So can you tell the options? Okay. 1001, 1101, 1000, Sir, 1 minute. 1101. 100. Third option. Third option is 1000. 1000. Fourth. 0100. ये सिंपल क्वेश्चन है यार, बीसीडी कोड है. 9 से ऊपर वाला 0 to 9 तो Sir, होगा. it's 0 to 9 is Yes, sir. valid. Above than that is invalid. Fine. तो जो भी 9 से बड़ा है डिजिट है वो इनवैलिड हो गया. 1000, sir. Yeah. Because No, 1000 is okay. 1101. या 1101 ठीक है, शशांक Yes, से sir. जो भी 9 से बड़ा होगा 0 to 1, 0 to 9 वैलिड है, उससे बड़ा इनवैलिड है. बस Yes, सिंपल. sir. बस 8421 के बोल दिया तो बीसीडी कोड नहीं बोला है ना, बस ये वाला. Yes. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज group of 4-bit form is called 4-bit group of 4 bits. Nibble. Nibble. हाँ सही है. Fine. Difference between intra and inter delay. Sir, in intra delay, there is a concept of temporary storage of sir values. For example, if you apply intra delay, the value is temporarily stored first and then applied at the time which delay is given. For example, you give a delay of 2 nanoseconds, then the first the value is temporarily stored, then this value will be applied to the variable at the 2 nanosecond delay. Whereas there is no such concept of temporary storage in inter delay. Yes. Okay, fine. Inter delay will exactly apply the value at the 2 nanosecond mark. Yes, sir. Also make example भी देना है इंटरव्यू में, है ना. Yes, sir. Debouncing circuit क्या होता है? Debouncing circuits. My options are astable multivibrator, bistable multivibrator, monostable multivibrator और latch. Debouncing circuit क्या होता है? Sir, latch होता है. ठीक है, आंसर सही है, लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना इसका, है ना. Yes, sir. कहीं पे पढ़ा था तुमने? Sir, guess था. सही है. NAND gate are generally preferred over other gates. Why NAND gates are preferred? Sir, first of all, NAND gates are universal gates, and
their Boolean synthesis is much easier than NOR gates because they apply the concept of multiplication. Then फास्टर कौन सा होता है इसमें simply से? नॉर गेट फास्टर होता है या नैंड गेट फास्टर होता है? yes sir. फास्टर कौन सा होता है फास्टर? Sir faster And NAND first sir ये concept एक बार सर्च कर लेना, है ना? yes sir क्यों क्यों बेटर confusion होता है yes sir दोनों में से? नोर और नैंड में से कौन सा बेटर होता है? दोनों यूनिवर्सल होता है, कौन सा बेटर होता है? एक बार सर्च yes कर sir. लेना। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ के मैप? डिसएडवांटेज वन डिसएडवांटेज ऑफ के मैप। Sir, disadvantage is that as number of variables increases, the minimization becomes difficult. Therefore, QM method is generally preferred for larger variables. या फाइन। डू यू नो व्हाट फ्लैश मेमोरी? फ्लैश मेमोरी पता है? सर EPROM वगैरह वही एक बार फ्लैश देख मेमोरी लेना। जनरली यस सर Fine. क्योंकि यहाँ पे अभी क्विज में आंसर आंसर इतने डिटेल में नहीं बता सकते ना, तो एक बार देख लेना, यस खुद सर से भी बहुत ज्यादा बेटर होगा, है ना? यस सर Which of the following is non-saturating logic family? TTL, CMOS, ECL, with तीन ऑप्शन दिया, CMOS, यस सर TTL, ECL, non-saturating family। non-saturating एक होती है, इसमें से एक ऑप्शन TTL, ECL, CMOS, non-saturating। नो सर नॉट एबल टू रिकॉल ठीक है, ECL होता है ना? सर सर ये पढ़ा था पर याद हाँ नहीं आ रहा वही है यस वो ही आता है। देखो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे मोस्ट ऑफली, है ना? टेस्ट यस वगैरह में सर पूछा जा यस सर सकता है, इंटरव्यू में नहीं पूछे यस सर जाएंगे, लेकिन तुमको एक यस सर अपना एक स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि कितनी प्रिपरेशन है ना? है यस ना? सर उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हो। इंटरव्यू का क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आएगा सब। एडर एडर बनाने के लिए फुल, आई वांट टू मेक अ फुल एडर, सो यूजिंग हाफ एडर्स, सो हाउ मेनी, व्हाट आर माय कंपोनेंट्स? कितने हाफ एडर चाहिए और क्या क्या गेट चाहिए? सर two 2 half adders are half required for adders 1 and full adder ओके। one OR gate. Carry look ahead adder is generally used frequently for addition, right? So why it yes is sir used? Less cost effective, faster, accuracy is more, or using lesser gates? What is your answer? sir faster फास्टर है? क्यों yes फास्टर है? थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताओ। सर जैसे रिपल कैरी एड्रेस के कंपैरिजन में अगर हम वो लें तो रिपल कैरी एड्रेस को वेट करना पड़ता है प्रीवियस इनपुट्स का जैसे It मान लो 4 reduces बिट रिपल carry. यस सर कैरी का जैसे 4 बिट अगर रिपल कैरी एडर हम यूज करें तो फर्स्ट बिट जो उसका फर्स्ट एडर है उसकी कैरी आउट का उसका वेट करना पड़ेगा सेकंड जो उसकी बिट है उसको प्रोसेस करने के लिए जबकि उसमें ऐसा नहीं है एक बार डायग्राम वगैरह अच्छे से Generally, देख it लेना इसका। reduces यस carry सर propagation delay. Uh, जस्ट चेक द डायग्राम आउट। ओके। यस सर वन एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर। एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर। सर टेलीकम्युनिकेशन में रिसीवर्स साइड में इसका यूज होता है डिकोडर का ठीक है। सर डिजिटल टू एनालॉग एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स में मैक्सिमम हाँ रिसीवर एंड में वही डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स में बढ़िया, हाँ सही है। टू एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। it is used for parallel to serial conversion and सर मक स्विच के लिए यूज होता है ज्यादातर लैपटॉप्स में डबल डेटा सेलेक्टर डिस्प्लेस वगैरह को पे होता है इसको, डेटा यस सेलेक्टर होता है।
है ना। तो एक बार देखो Yeah, 5-6 data एप्लीकेशन selector. याद हो रही है ना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन मिले और मोरे। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो 6-7 डिफरेंस तो कॉमन है इंटर उसमें, उसमें से 6-7 Yes, कॉमन, sir. Yeah. एक तो मिले मोरे हो गया, सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन हो गया, इंटर इंटर डिले हो गया, और फ्लिप Yes, फ्लॉप sir. और लैच का डिले हो गया, और एसिंक्रोनस से सिंक्रोनस रीसेट का हो गया। तो 6-7 ये हैं। इसमें से दो तो जनरली पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर जनरल इंटरव्यू है इन डिजिटल का तो दो तो पूछे जाते हैं। तो ये तो रट के जाओ, एटलीस्ट Yes. 5-5 डिफरेंस बता दें। जैसे पूछेगा Yes, sir. और जाति बोल दो, है ना। तो ये Yes, sir. डिफरेंसेस तो बताने हैं। Sir, हाँ तो in Mealy mission, क्या, टेल मी डिफरेंस बिटवीन बोथ। in Mealy mission, the output of the circuit depends on both the present output and the present input, present state and present input. In more machine, the output depends on the only on the present state, not on present input. What other? And so, due to this dependence, more machine requires more hardware and has more complex design. But Mealy machine has simpler design, require less hardware. और कुछ? ठीक है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाता हूँ। एक बार देख लेना, है ना, क्योंकि 5 डिफरेंस तो पता होने चाहिए, है ना। Yes, sir. विच इज यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप? यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? Sir, JK. क्यू है? D flip flop. जेके। जेके इज आंसर। व्हाई इट इज सो? Mm, sir, because other flip flops can be made from this. सो टेल मी वन डिसएडवांटेज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। Sir, race around condition. हाउ व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन? Sir, during toggling phase, if we continue to apply our inputs, the output will change between 1 and 0 continuously. So we don't know what comes first, whether 1 or 0. सो एट व्हाट कंडीशन इट विल हैपन? It will happen or it will solve. इट विल हैपन कब होगा? लाइक जेके की Sir, वैल्यू कब? toggling phase. 1 जेके 1. की Sir, वैल्यू वन toggling वन। phase. हाँ, 1-1 Yes, होनी sir. चाहिए जेके की वैल्यू। Yeah. और Yes. दूसरा सोल्व कैसे होगा? हाउ इट Sir, विल? master slave or edge triggered clock. तो क्या होता है उसमें, क्या होता है? Sir, थोड़ा edge मास्टर trigger स्लेव में बोलते हैं। हम master slave में sir we use two flip flop. The output of one is used as an input of other. Sir, due to this, the overall output has to wait for the input from first flip flop. Therefore, there will be a gap between the toggling phase, and the ones and zeros will be separated at the output. ओके, मास्टर स्लेव इज एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड? Yes, sir. मास्टर Sir, स्लेव lever. Sir, लेवल। edge triggered. एक बार कंफर्म Uh, करना, yes, एक sir. बार चेक करना उसके बारे में, है ना। Sir, basically, in JK flip-flop, these phase around condition occurs whenever there are three conditions. One is when J equal to K equals to 1, and other one is when width of clock is greater than propagation delay. And uh, here, feedback is directly applied to the inputs. Therefore, the output will continuously toggle between 1 and 0. So we don't know the correct state of the output. And if we control this feedback, the race around condition can be reduced. For this, we arranged another JK in the output. As we are controlling the feedback, the clock is given to first JK flip flop, and this reverse clock, that is inverted clock, is given to the next JK flip flop, so that whenever the master is on, the slave will off.
So like this the feedback will be controlled and the toggling will be also controlled. Check the diagram also. Okay. Next question is, okay. I want to calculate the resolution of 6-bit DAC. 6-bit DAC का resolution calculate करना है, तो कैसे calculate करेंगे? फॉर्मूला पता है? नो सर 100 डिवाइड बाय 2 की पावर n, है ना? तो एक बार चेक कर लेना, परसेंटेज में बता रहा हूँ, रेजोल्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला है यार. देखो ये क्वेश्चन तुमको टेस्ट वगैरह पूछा जा सकता है, इंटरव्यू नहीं पूछा जाएगा, है ना? तो अपने हिसाब से देख लो. यस सर बोर्ड इफेक्ट पड़ा है? बोर्ड इफेक्ट बॉडी इफेक्ट एनालॉग में है, ये एनालॉग कन्वर्ट है, आता है? सर मोसफेट्स में होता है, इतना याद है, बाकी बीजेटी में Yes, sir. होता है, guys, देख लेना. Yes. कोई नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेफेट और मॉसफेट में अंतर बताओ. जेफेट एंड मॉसफेट में डिफरेंस. सिंपल तो एनालॉग का भी पूछा जाएगा, सिंपल थोड़ा बहुत एनालॉग का भी पढ़ के यस जाना. सर यस सर हम्म, सर जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होता है, और मोसफेट है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. इसमें मोसफेट में जनरली हम जो कैपेसिटेंस इंक्लूड होता है, क्योंकि इसमें ऑक्साइड के साथ हम उसको मेटल को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये कैपेसिटेंस को जनरेट करता है, जबकि जो जंक्शन है वो पीएन जंक्शन का यूटिलाइज करके मोसफेट के फंक्शंस को परफॉर्म करता है सर. एफईटी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ठीक है. यस सर एक बार डायग्राम वगैरह देख लेना इसका अच्छे से, है ना? फॉर्मूला भी होता यस है, सर दोनों तीनों यस फॉर्मूला सर यस है ना, फंक्शनलिटी देख लेना. ठीक है. सर कुछ 6 मिनट बचा. फीफो के बारे में पढ़ा है? फीफो, फीफो का यूज क्या होता है? व्हाट व्हाई वी आर यूजिंग फीफो? सर जनरली स्टोरेज मेमोरी पर्पस के लिए यूज होता है. फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सर लाइक ए स्टैक हम इसको यूज करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए. मतलब जैसे मान लो 4 बिट है, तो 4 बिट हम रजिस्टर्स का यूज करके इसमें डेटा को स्टोर करते हैं सर फीफो में. जनरली दो टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. डिफरेंस क्या होता है? सर डिफरेंस सर अभी नहीं. डिफरेंस याद नहीं आ रहा. ठीक Yes, है. sir. In synchronous FIFO, we are giving a clock. In asynchronous FIFO, we are not giving a clock. The write or read operations will perform at the immediately. Like whenever the write clock is applied, it performs the write operation. And in synchronous FIFO, whenever the clock is available, then only the write operation is performed or read operation. Just check it once, fine. Check it once. Okay. This is not correct. So just check it once, fine. So next question is Verilog से पूछना है. Why what is a stop? डॉलर स्टॉप के बारे में पता है? डॉलर स्टॉप. शशांक, डॉलर स्टॉप पढ़ा है? डोल डोल स्ट्रोब हाँ. STROBE. यस सर सर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए यूज होता है. इसकी जनरली जो प्रॉपर्टीज है, इसकी डॉलर डिस्प्ले और डॉलर मॉनिटर से मैच करती है. वन प्रॉपर्टी डॉलर डिस्प्ले की, वन प्रॉपर्टी डॉलर उसकी डॉलर मॉनिटर की. सर ये लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट करता है उस पे. फॉर एग्जांपल इफ योर वैल्यूज आर चेंजिंग, इट विल प्रिंट द लेटेस्ट वैल्यू दैट इज that you have given in the input. Okay, भाई, fine. And also it does not depends on the position. Wherever we place the strobe Yes sir, statement, position independent sir. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू पता है क्या होता है? Sir डबल इक्वल टू logic equality and bit equality. Yes sir. डिफरेंस क्या होता है?
Sir, logic equality will consider logic 1 or logic 0. Sir, bit equality will consider bit by bit. For example, you have 4-bit input given, then it will compare all 4 bits one by one. But logical bit will consider logic 1 or either logic 0. ओके फाइन Yes. इसको न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझाना है ना, कुछ वैल्यू पुट करके वैल्यू के थ्रू समझाना. Yes, sir. Yes. डिफरेंस Yes, sir. बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर. Yes, sir. Sir, microcontroller generally includes your RAM. Maximum mostly the parts of microprocessor they are included in microcontroller that we use as peripherals in microcontroller. For example, the RAM, the memory controller, and IO controller. Maximum use controller is in inbuilt, but microprocessor we have to use them separately. For example, we use separately RAM, the IO the controllers like PCIe ports, etc. And microcontrollers are generally cheaper than microprocessors, and microcontrollers are application specific. For example, they have very less but the microprocessor have wide applications. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन टास्क एंड फंक्शन. ये भी पूछा जा Functions, no. Yes, sir. Sir, Verilog में include हो task. Generally, task जो टेल. task and function are generally used for the reuse of set of statements. But the main difference between task and function is task is non-synthesizable and function is synthesizable. And in function, we don't use any we don't introduce any delays. And in task, we can introduce delays. That is why we cannot. It is not synthesizable, and it is used in test benches. Functions are used for the that means for designing purpose. Okay, fine. Next question is difference between dollar monitored and dollar display. Dollar monitored. Sir, first of all, dollar display will display the value only once, whereas the dollar monitor display whenever the changes occurs at input. And dollar monitor is dollar display is position specific, whereas dollar monitor is not position specific. Sir, events also the dollar monitor generally operates in 4th cycle, whereas the dollar display generally in the first event or first cycle. Okay. So my next question is So 1 minute left. okay. So what is an always block in Verilog and why when it is used? Always block. So always block will change the outputs whenever there is a change in input. For example, if you give if your output is if your input is changing to 1010, for example, you have given a clock pulse, then your output will always change with respect to the clock with the change in the clock pulse. Okay then. So these were all the questions for today. Next question, you can join the next quiz also, right? Okay then. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Yes. Good night. Thank you. Thank you.